Hello students, I am Ajit Kumar Shukla. It is 6 April 2020. I am once again in front of you with a new video for the subject Science of class 7th. Our today's topic is nutrition in plants. Before going to our topic nutrition in plants, I would like to tell you what is nutrition. Here is our definition of nutrition. Nutrition, to get the nutrients. What are nutrients? Like carbohydrate, fats, minerals, vitamins and proteins. These are known as nutrients. So, to get the nutrients by feeding, यानी भोजन करने के द्वारा खाने से न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करना which are essential for survival of all living beings, जो किसी भी जीवित व्यक्ति के लिए इस पृथ्वी पर सरवाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं, इज नोन एज न्यूट्रिशन. इसे हम न्यूट्रिशन यानी पोषण कहते हैं. वंस अगेन, to get the nutrients by feeding which are essential for survival of all living beings is known as nutrition. On the basis of getting nutrition, the living beings are two types. यानी भोजन को प्राप्त करने की विधियों के आधार पर लिविंग बींग्स दो प्रकार के होते हैं. ऑटोट्रॉफ्स means the living beings which get or make their own food by own self. यानी वे जीव जो अपने खुद के लिए भोजन स्वयं तैयार करते हैं. इसके एग्जाम्पल में ऑल ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं. एंड द सेकंड वन इज हेटरोट्रॉफ्स. हेटरोट्रॉफ्स मीन्स एनिमल्स, ह्यूमन काइंड एंड sometimes some plants. Now move to other topic. Mode of nutrition in plants. As our topic is nutrition in plants, so we will learn here the mode of nutrition in plants. Plants are only organisms that can make their own food. Plants इस पृथ्वी पर एक अकेले जीवधारी हैं जो अपने लिए स्वयं फूड यानी भोजन तैयार कर पाते हैं, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शंस. कुछ अपवाद हैं, मीन्स कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो ऐसा नहीं कर पाते हैं. मोस्ट ऑफ प्लांट्स खुद के लिए अपना भोजन तैयार कर लेते हैं. प्लांट्स कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स. प्लांट्स को आगे हम ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स में डिवाइड कर सकते हैं. ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स, द प्लांट्स व्हिच मेक देयर ओन फूड कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. ऐसे प्लांट्स जो अपने खुद के लिए भोजन तैयार कर लेते हैं, इन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. They uses simple substances like water and CO2 and make glucose which further converted into starch. यानी ऐसे प्लांट्स जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड, ग्राउंड वाटर, सनलाइट, इन सभी के प्रेजेंस से खुद के लिए फूड बना लेते हैं जो ग्लूकोज के रूप में बनता है एंड फाइनली कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च के रूप में. These are two types of autotrophs. Autotrophs दो प्रकार के होते हैं, एक phototrophs और दूसरे chemoautotrophs. Photoautotrophs, here the photo means प्रकाश. It means the plants derive food from sunlight. ऐसे plants जो अपना भोजन सनलाइट यानी सूर्य की उपस्थिति में बनाते हैं उन्हें फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. एग्जाम्पल ऑल ग्रीन प्लांट्स will be example of photoautotrophs. And the another one are chemoautotrophs. Chemoautotrophs means these plants uses chemical energy to make food. ये plants अपने फूड को बनाने के लिए या आवश्यक न्यूट्रिशन को प्राप्त करने के लिए केमिकल पावर का, केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रेट. एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रेट को थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन करूंगा मैं.
कुछ बैक्टीरियाज होते हैं प्रेजेंट इन द लेग्यूम्स, leguminous plants which convert the atmospheric nitrogen into the nitrate, that then the convert nitrate takes by the plants to complete their nutrition. Here the next, heterotrophic plants. After the completion of autotrophic plants, the topic is heterotrophic plants. Heterotrophic plants are the plants which depend upon autotrophs and sometimes insects are called heterotrophic plants. ऐसे plants जो अपने भोजन के लिए दूसरे प्लांट पर, दूसरे ऑटोट्रॉफ प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं या कभी कभी इंसेक्ट्स पर भी डिपेंड करते हैं, ऐसे प्लांट्स हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स में आ जाते हैं. देयर आर सम एग्जांपल्स लाइक पैरासाइट्स, insectivores, saprophytes, etc. Now move to the another topic which is photosynthesis. Photosynthesis is the process in which food making process in plants. In this process the plants make their own food. Now here let's see the definition of photosynthesis process. The green plants make their own food with the help of water, carbon dioxide, chlorophyll in the presence of sunlight. This process is known as photosynthesis. यानी फोटोसिंथेसिस को हम हिंदी में प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, या वह प्रक्रिया होती है जिसमें हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सहायता लेते हैं वाटर की यानी जल, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, एक ग्रीन पिगमेंट होता है फाउंड इन द ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और सूर्य की रोशनी. इन चीजों की मदद से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए ग्रीन प्लांट्स अपने लिए फूड बना लेते हैं. हियर रिएक्शन फॉर्म इज गिवन ऑफ photosynthesis. 6 CO2 plus 6 H2O means कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल और H2O के 6 मॉलिक्यूल in the presence of sunlight and green pigment like chlorophyll convert into C6H12O6. Here C6H12O6 we can say it that it is a glucose or starch, and the byproduct we get after this photosynthesis process is CO2. That is why photosynthesis process is becomes more essential, because in this process we can get an oxygen gas, which is very important for the all living beings. Here the complete mechanism of step by step of photosynthesis is number one, the stomata which are found on green leaves as pores. सबसे पहले जो स्टोमेटा जो ग्रीन लीव्स में हरी पत्तियों में पौधों की पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स के रूप में यानी छिद्र के रूप में एब्जॉर्ब CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एंड द रूट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द ग्राउंड. और जो रूट्स होती हैं पौधों की, जड़ें होती हैं, ये ग्राउंड से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, विच ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और यह वाटर लीव्स तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है. द सेकेंड पॉइंट इज क्लोरोफिल, अ ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन प्लांट्स. क्लोरोफिल जो जिसको हम हिंदी में हरित लवक के नाम से जानते हैं, ये ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट रहता है, और क्लोरोफिल कैप्चर्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट. क्लोरोफिल का ये वर्क होता है कि ये सनलाइट से आने वाली एनर्जी को कैप्चर कर लेता है. When a green plant took all these substances like carbon dioxide, water and the sunlight energy, then it makes their own food, and the process of photosynthesis becomes complete. Thus, by using all these components, plants make their own food and releases an oxygen gas which is essential to survive on the earth. इस तरह से now we complete our photosynthesis topic, and the
nutrition in plants topic in this video. Here is some topics remain, so we will cover that topics in our next video. Thank you.